बिकॉज इट्स मोर ऑन द लाइंस कि अगर तुम्हारे पास सही इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ पे कैसे क्या कर रहा है, देन you got better position to achieve your dreams than others. Coming back to the point कि like what are the best countries that you should be aware of, and it's not like कि like यहाँ पे free है tuition so इसी में जाना चाहिए, ऐसा नहीं है. बहुत कुछ सोच समझ tuition लिया करो. That is the first thing, but पहले let's be aware. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. So most students look at tuition fees and think like wow, जर्मनी में फ्री यूनिवर्सिटी है, कोई ट्यूशन नहीं लगता. बट द ब्रूटल ट्रूथ इज लो ट्यूशन प्लस हाई लिविंग कॉस्ट एंड द क्रेजी वीजा रिक्वायरमेंट किल्स अफोर्डेबिलिटी. फॉर एग्जांपल इन यूरोप ट्यूशन मे बी लाइक 0 to like let's say 4 grand a year euros में, बट फॉर नॉन यूरो स्टूडेंट्स दिस इज डिफरेंट. ठीक है, यू टू हैव द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज रिसर्च. ठीक है, कि कहाँ पे क्या है, एंड एक एक कंट्री वाइज जाएंगे, एंड थ्रू दिस वी वुड बी लाइक सॉर्ट ऑफ like rating the affordability, scholarship scope as well, जिससे को पता चले कि which is the best and कौन सा खराब है कौन सा बुरा है. ठीक है, the first country is Germany. Germany is still the king of cheap study abroad. ठीक है, public universities charge almost zero tuition for many undergrad programs. हाँ, यहाँ पे ना बहुत लोग मिस कर जाते हैं with the living cost. Living cost is somewhere around 900 to like 1200 per month. ठीक है, यूरोस की बात कर रहे हैं हम लोग, यूरोस. ठीक है, that would somewhere round up to be like 11 से 12 लाख रुपए per year just for living in many cases. Visa for non-EU students still need you to show the proof of funds. ठीक है, that is just amount. This is called the blocked amount के basis. So इसको तुम्हें दिखाना पड़ता है and then you get the visa. Eligible to get the visa if you have this much money in the bank account. Scholarships, moderate undergrad merit aid मिलता है, but full ride bachelors में बहुत ही रेयर है, बहुत रेयर है. नीड बेस तो नहीं मिलता नहीं है. अफोर्डेबिलिटी के लिए it's 9 out of 10 and mainly because tuition is almost zero, that cuts a lot of things. And scholarship scope maybe like 6.5 out of 10. The catch is if you pay Munich or Berlin, you will pay more rent. That is one thing. And German language still helps for jobs. And German language अगर तुम्हें आती है तुम बहुत आगे हो लोगों से. The next country is France. So France public university charge very low tuition, very low. ठीक है. Bachelors for non-EU students कुछ के लिए it could go to like 2.7 grand a year. ठीक है. That is something like that. Living in Paris might had like 900 से 1400 per month. यूरोस की बात कर रहे हैं. Smaller towns are cheaper, so accommodation is a very big factor in like studying abroad. तुम कहाँ रह रहे हैं, 4 साल तुम्हें वही बिताने हैं, like almost 4 से 1-2 साल तो वही भी बिताने हैं, ऐसा पकड़ के चलो. And scholarships like a good number of grants, 8 programs for international students है. Like I made a detailed video in France की क्या क्या है available. Like the government also pay you money for like I think 100 euros pay करती है for this is called the CAF for housing के लिए. So that kind of provisions are also there in France. ठीक है, the rating for it is affordability के लिए 7 out of 10. Scholarship scopes 7 out of 10. Ratings vary कर सकती है. Put your own thoughts like in the comments, you would love to read. The catch is big variation by cities. French language सीखना is a very very plus point, just like Germany में German, and especially for post work study के लिए much more bigger than that. Netherlands is like a lot of English short programs are there, which is great, but the tuition for non-EU undergrad could range from like 6,000 to 21,000 euros की बात कर रहे हैं हम लोग per year. That is great just for tuition. ठीक है. Obviously you will need like 800 से 1500 euros per month. You will need some solid proof of fund. That is something. So affordability के लिए Netherlands might not be a best option. So that's it. It's going to be like 5 out of 10. मैं इसको 5.5 दूंगा anyways. And scholarship के लिए 6. Yeah. The only advantage Netherlands में है is that it's English medium. ठीक है. And a good job market. That is the cost tips are very fast, especially in Amsterdam. So that is one very big disadvantage. By the way guys, we are making this like ये वाला जो preview है ना, इसमें सारे countries के cost wise सब कुछ है. So you can just check it out. And we have also another preview. ये मैं थोड़ा एंड में बोलूँगा. ठीक है. पहले इटाली की बात करते हैं. Public Italian universities often charge from like 1,000 से 4,000 per year. Living cost में भी like 700 से 1,300 के रेंज पे. ठीक है, in many cities. Scholarship invest like exist करती है. ठीक है, but I won't think like ऐसा है कि फुल राइड मिलेगा. ठीक है, that is very rare. ठीक है, यूरोप में फुल राइड मिलना based on need based state is like very very rare guys, very rare. ठीक है, हंगरी में भी हंगरी में सिक्योरिटी स्पेंड कम होता है, स्टाइपेंड इनकम होता है, but still getting that is rare. You to understand. And ऐसे like पब में इन्वेस्ट करना या पब में चले जाना, it's a very big, it don't pick rash decisions. That's what I'm trying to say about studying abroad, because ये 4 साल की बात कर रहे हैं, 1-2 साल की नहीं. Well, in Italy if you go to Milan or Rome you will pay more. English programs are limited versus in Germany or Netherlands में. So affordability के लिए 7 out of 10. Scholarship is 5.5. UK और USA की बात करते हैं. USA में like very big financial aid मिलती है. That's the only country that provide you a big financial aid. What that basically means, अगर तुम्हारे पास पैसे कम है
तुम कम पे करोगे अगर तुम एक्सेप्ट हो। एंड फॉर दैट यू टू हैव अ क्रेजी प्रोफाइल, नॉट अ क्रेजी प्रोफाइल बट better than average, that's what I would say, ठीक है। So that is the main thing about USA. Another important part is कि even if you are getting acceptance and even if you are getting easy acceptances, when I say easy acceptances I mean like getting into state universities or getting into like वो universities जहाँ पे like lower UCs वैसे then you are looking at a price of somewhere around 50 से like 70-80 लाख और 4 साल in the minimum end, ठीक है। मुझे Lexus Express मिला था, my total cost there मतलब ओवरऑल एस्टिमेट बता रहा हूँ वुड बी समवेयर अराउंड 60 to 80 लाख फॉर 4 years। आई वाज लाइक नहीं मुझे पे नहीं करने पे बाप एक कार डेली के लिए लाइक आई वाज नॉट एट द पॉइंट कि लाइक मेरे को से लोन लेके जाऊं डायरेक्ट बट सो फॉर अफोर्डेबिलिटी लाइक व्हेन वी से अफोर्डेबिलिटी लाइक अगर स्कॉलरशिप मिल रहा है देन अच्छी स्कॉलरशिप मिल रहा है जहाँ पे तुम्हारा EFC इफेक्टिव फैमिली कंट्रीब्यूशन इज समवेयर अराउंड 10K पर ईयर देन ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड वन। अफोर्डेबिलिटी में लाइक इट कुड गो फ्रॉम लाइक 8 to 9 बिकॉज बाकी लिविंग कॉस्ट भी कवर हो जाते हैं एक साथ आते हैं ना सब कुछ। बट अगर तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे then affordability में it could go from around 2 to 3 like maybe like 4 provided scholarship को बहुत है USA में I would say कि like you get in it's 9 out of 10 like it's the best obviously। UK में बहुत लोग चले जाते हैं and you know what UK में अगर तुम्हारे पास पैसे हैं then only जाओ, that is like plain idea का ही बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। बिकॉज UK में नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड मिलना इज वेरी डब, जो मिलता है तुम्हें मेरिट बेस्ड मिलता है देन यू हैव टू पे अ हैवी लिविंग कॉस्ट। व्हेन आई से हैवी लिविंग कॉस्ट आई रियली मीन 4 साल के लिए तुम 1 करोड़ तो पकड़ ही लो, ठीक है, ऑन द लाइक सब कुछ मिला के। तो दैट इज समथिंग बिकॉज एंड आई नो दिस बाय मेनली बिकॉज सम ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रॉम ABF are already in US UK and they are like bhai like all of them had a very good financial stability, ठीक है, that is an important factor। affordability के लिए maybe 2 out of 10 but scholarship scope is I would still say like 5 out of 10 or something because merit based मिलके भी you will end up paying something similar to that। For Singapore well tuition fee plus living gets you somewhere around like Singaporean dollars में 20 से 30 हजार per year which is close to around like 20 से 25 लाख इंडियन आए ना। हांगकांग में भी लाइक हांगकांग HKD में कितना होगा आई थिंक 150K, ठीक है, विच कुड कम समवेयर अराउंड लाइक 17 से 20 लाख फाइन। ROI कुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस कंट्रीज, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग मतलब यू नो हाई इंटरेस्ट रेट एंड गुड जॉब मार्केट्स दैट इज समथिंग देयर, ठीक है। बट तुम 4 साल की अगर तुम 25 लाख दे रहे हो तो वहां भी 1 करोड़ ही जा रहे हैं। एक्सेप्शन है कि अगर तुम्हें हांगकांग में फुल राइड या यू नो फुल ट्यूशन मिल रहा है दैट वुड क्रेजीली रिड्यूस द अमाउंट, अदर दैट इज वेरी हार्ड। मुझे पार्शियल मिला था HK यूनिवर्सिटी से बट 4 साल के लिए इट वाज व्हेन आई कैलकुलेटेड दैट टाइम इट वाज समवेयर कमिंग अराउंड 80 लाख से भी ज्यादा फॉर 4 years लाइक सब कुछ मिला के, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी में मे बी लाइक सिंगापुर एंड हांगकांग वुड समवेयर रेंज अराउंड 3 to 4 बट स्कॉलरशिप में इट्स अ लिटिल हार्ड अनलेस यू गेट सम वेरी एकेडमिकली बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। इफ आई वर इन योर शू एज एन इंडियन स्टूडेंट बजट लिमिटेड वांटिंग फॉर अब्रॉड अंडरग्रेजुएट दिस इज व्हाट आई वुड, ठीक है। मैं पहले रिसर्च करते हुए आया कि कहाँ पे किस कंट्री में किस यूनिवर्सिटी में मिल रहा है बिकॉज स्कॉलरशिप ना इट्स अ लॉट मोर डिपेंडेंट कि तुम्हें लाइक हाउ गुड योर रिसर्च इज बिकॉज कुछ शायद अनरेटेड स्कॉलरशिप भी एग्जिस्ट करती है कुछ कंट्री में कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जिसे ओपनली सब नहीं जानते, अगर सब जानते तो बहुत लोग अप्लाई करते हैं चले भी जाते हैं, ठीक है। मोर ऑन द लाइन की यू हैव टू डू योर रिसर्च फर्स्ट। ऑन द अदर हैंड HK यूज्ड टू मी दैट वे हो रहा है यू हैव टू हैव लाइक यू नो सम दिस ओलंपिक fit the medals and अगर तुम यूरोप के बारे में तैयारी कर रहे हो कि लाइक आई कैन अफोर्ड टू गो टू लाइक जर्मनी फॉर 4 years और सम लाइक मैं सबसे पहले लैंग्वेज सीखता, ठीक है, लैंग्वेज के लिए प्रेप करता एंड आई वुड प्रॉब्ली स्टार्ट डूइंग इट लाइक यू नो वन ईयर अहेड मे बी जब मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करूंगा फिर से अब्रॉड देन प्रॉब्ली आई वुड स्टार्ट फॉर बैचलर्स आई वुड स्टिल द सेम आई वुड स्टिल से द सेम कि पहले से लैंग्वेज सीख मन बना लो कि लाइक तुम्हें यही पे जाना है, दिस इज योर लक्ष्य एंड यू हैव टू क्रैक दैट, ठीक है। एंड रिसर्च में सबसे ज्यादा टाइम जाता है एंड इसमें जाना ही चाहिए बिकॉज इन द एंड तुम्हारी रिसर्च पे तुम्हारा एंटायर फ्यूचर टिका रहता है। इवन आफ्टर कैलकुलेटिंग द INR का बजट प्लीज ऐड 10 से 15% पर फॉर करेंसी वेरिएशन ईयर वाइज अप डाउन कर रहा है कि नहीं, दैट इज समथिंग एंड शुरू करो। अगर तुम इफ यू आर अ इंडियन स्टूडेंट हु आर इज ट्राइंग टू लाइक यू नो गो अब्रॉड फॉर अंडरग्रेड और इवन लाइक पोस्ट ग्रेड रिसर्च जितना जल्दी तुम शुरू करोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर होगा। या सो दैट्स ऑल प्रीटी मच and studying abroad doesn't mean being broke abroad, ठीक है, it means like choosing the smart use of data pick the country that fits your budget plus goal not just the famous one और ranking में है, ठीक है। QS ranking don't follow QS ranking compliantly compare it with others times news US news I mean Shanghai उसके बाद मिशन लिया करो। if you want a preview like you know deadlines किस country में क्या deadline है किस application portal से apply करना है they have made that easy here guys from AVF you can check that out, ठीक है।
and drop a comment below which country surprised you the most and which one you're leading to, and I'll check in and reply कर दूंगा. And if you found this helpful, like button देना और subscribe देना, and हमारा ABF group join कर सकते हो if you are interested. क्या हेल्पफुल बातें होती हैं and free to join है, कोई गेट इन चाहो, बहुत कुछ भी नहीं है, ना हम लोग काउंसलर्स है, ना हम लोग कंसल्टेंट्स है. We just want to help people, just Indians, just like ourselves. So that's all. See you in the next video. Until then, plan smart and high. Alvida.